Hello guys, so welcome to another video of PostgreSQL Masterclass, and today we are going to be studying about is null operator, right? So होता क्या है कि अगर हमें कॉलम में चेक करना है कि if that value actually exists or not, we use this is null operator to check कि अगर इस कॉलम में कोई वैल्यूज मिसिंग है या नहीं है, राइट? हमने ऑलरेडी नल के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पहले देखा था कि नल का मतलब होता है कि आपके कोई कॉलम में उस कॉलम के लिए अगर वैल्यूज मिसिंग है या फिर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, एप्लीकेबल नहीं है, then we generally represent it by null. जैसे कि अगर स्ट्रिंग होता है तो यू वुड थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि चलो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो उसको नल होगा शायद, राइट? इट डजंट वर्क लाइक दैट. इफ इट इज मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस डेटाबेस, make sure it's null. Null is actually it's not a value. You cannot compare it with other values like numbers or string. So what does it mean कि अगर हम null को ना कभी भी like कोई वेरिएबल कोई कॉलम में like कोई अगर हम null है, right? Apple है string. If you compare it with null directly with equal to or this operator equal to or not equal to, which we have already discussed, then it will always result in null. We want to know that whether something is actually it's null or not. So null is not equal to null. So what does it mean? Ki if we compare it like this, null is equal to null. In this case, it will return as null only. पर इस केस में हम चाहते क्या थे? हमें यहाँ पे मिले true, right? तो अगर इसको हम रन करेंगे एक बार, select and then we write null is equal to null and then as result, so this should give us null as output. But if we use this, right, null is null, so in this case mein it is like the exact thing that we're trying to compare, and whenever we are comparing null with something we should use the is operator. So in this case mein hame ye true dega. It exactly means ki null is null, right? So equal to and not equal to, do not use this operator when you are trying to check if the value is null or not. So use the is null operator. इसका सिंटैक्स ये है, अगर आपकी कोई कॉलम है तो उसमें आपको ये चेक करना है कि whether some null exists or not, you can use this way. That column something like maybe address ID in our column है तो you want to check like this कि whether address ID is null. If you want to check whether the address ID is some value there is no missing information, then you would use the address is not null. So we will use the address table in our DBT rentals database. इसके कॉलम्स कुछ इस तरीके के हैं, एड्रेस आईडी, एड्रेस टू डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड पोस्टल कोड, फोन एंड लास्ट अपडेट. सो व्हाट वी वांट टू चेक इज लाइक सेलेक्ट एड्रेस टू फ्रॉम एड्रेस, पर एड्रेस टू इज नल, राइट? सो लेट्स रन दिस क्वेरी जस्ट. और एक्चुअली पहला हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जिस्ट करता है. सो लेट्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड अपना टेबल का नाम है एड्रेस, राइट? सो लेट्स रन दिस and if we run this we will get some output here. Let me put me someplace else here. तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एड्रेस टू नल है एंड दीज आर द कॉलम्स दैट आई हैव, राइट? सो इफ आई नाउ वांट टू चेक एंड सम एड्रेस इज लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी कैन सी दैट एड्रेस टू में कुछ कॉलम्स में नल है और कुछ एम्प्टी वैल्यूज है. सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू सेलेक्ट फ्रॉम हियर एड्रेस, राइट? एड्रेस एंड देन एड्रेस टू फ्रॉम एड्रेस where address 2 is null, right? So ये हम केवल ये 4 कॉलम्स देगा. इसको हम रन कर लेते हैं तो हमारे पास भी 4 कॉलम आ गए, which was exactly सही कि किसमें address 2 is missing. So that those are the kind of columns that we wanted. And if we say address 2 is not null, so इस केस में आप देखना कि आपको वो भी कॉलम्स आ जाएंगे जिसमें strings जो होती हैं आपकी empty है. So let's do this. Let's run this and then see here where address 2 is even empty values I have come here, right? So this is what I exactly wanted to say. When you want to check whether some column has null values or not, you will use the is null operator, and if you want to check if it is not null, then you will use the is not null operator. So that is all I wanted to say in this video. This is about checking if is null is an operator to check if a value is null or not. So see you guys, I'll see you in the next video. Bye.